DRDO, Defense Research and Development Organization, is doing marvelous job in this corona pandemic. Kashi Halchal interviewed with DRDO scientist Dr. Shravan Singh. Let us see how DRDO is working in this corona pandemic. We also talked about third wave of corona with Dr. Shravan. नमस्कार दर्शकों, काशी हलचल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम वाराणसी में हैं और वाराणसी में आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो हैं DRDO से जुड़े हुए डॉक्टर श्रवण सिंह, जो कि DRDO हॉस्पिटल के मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद अमित जी। काशी हलचल के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। श्रवण जी, आप वाराणसी आए। वाराणसी में अभी हाल ही में कोरोना से लड़ने के लिए DRDO हॉस्पिटल, जो कि पद्म भूषण पंडित राजेंद्र मिश्रा जी के नाम से खोला गया है BHU में, तो आप यहाँ पर क्या देखने आए हैं या आपकी वर्किंग क्या होती है यहाँ पे, वो थोड़ा सा हम डिटेल में दर्शकों को बताना चाहते हैं। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ द COVID-19 disaster. This is a national disasters. In national disasters, DRDO playing very important roles in the management of COVID-19. DRDO initially it is working on the PPE kit testing parts, then developed the sanitizer parts, another developing the more than 50 technology for the COVID-19 managements, and including the Ultra Swachh. These are the major technology developed by the DRDOs, especially the AINA. These are the artificial intelligence based the techniques for the human recognitions during the attendance periods. This is very difficult things to touch the biometric system. So face recognition based AINA they developed by the RCI DRDO laboratories. And DPAS is developed the UV waste sanitizer chamber for the mobile contaminations provisions. And another the INMAS developed the Ultra Swachh, and other the GermiCleans. And GermiClean is installed at the various hospital as well as is the different ministries gates for the sterilization purpose of the PPE kits and as well as the police dresses. In that more than 25 worthy we can sterile through these systems. And another is the Ultra Swachh, the major technology that is based on the ozone based technology. This is the ozone. Through the ozone this kill the viruses and bacterial parts. Through this there is no need of the washing of the PPE kits or the other dresses. This is directly disinfect the PPE kits. So these are the various tools from the PPE testing to the development of sanitizer, and ultimately recently INMAS launched the 2DG drugs. That is very important for the COVID-19 patient, especially moderate to severe patients, saving the life and reducing the residual periods in the hospital around 2 to 3 days, as well as also reduces the oxygen demands in the body. So in this way DRDO cut in short we can say playing important role in COVID disasters management. Here is the Banaras in places one hospital is developed. This is another study of the DRDOs that developed the around 8 cities, 8 hospital. First hospital that is in record times 10 days. In 10 days there is developed 1000 bed hospitals in Delhi. After that they developed the DRDO hospital at the Muzaffarpur, Bihar, and the Patna. And in this year 2021 DRDO also made a hospital at the Gandhinagar, Ahmedabad, and Lucknow, and ultimately in this city Varanasi. So this is the honor to say that this hospital name on the Padma Vibhushan Pandit Rajan Mishra's name, and it is
at the peak time. This is make hospital. It is essential for the COVID-19 management. Dr. Shravan, we want to know कि the third storm is about to come and the scientists and the doctors are saying then the certainly third storm of corona will come and it will affect the children who are below 18 years. Either DRDO is doing something about that. Yes, it is expected that third wave come. It may be in November or December after the festival period Dasara and Deepavali, but be precautionary taking the steps and making 50 bed for the kids and we are procuring the mask for the kids, especially design mask for the kids as well as pediatricians. We are arranging these things. So this is the new development in the hospitals. Be separately making the 50 beds for the kids. In every DRDO hospital? Yes, almost in every hospitals. Yeah. तो डॉक्टर शर्मा, वी वांट टू नो कि तीसरी लहर के बारे में बहुत सी बातें हो रही हैं, तो क्या बच्चों के लिए स्पेशल आईसीयू बेड या इस तरह की कुछ डिज़ाइन की ज़रूरत पड़ेगी अगर तीसरी लहर आती है? कि बच्चों का ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज़ वेरी डिफरेंट रादर देन द एडल्ट वंस. Actually, third wave it is predicted that kids are the more susceptible for that. There is various explanation about this, but according to me, the child will not so much affected by this third waves. But yes, because in second waves, most of the public, most of the leaders, most of the scientists बहुत ही भयावह तरह से प्रभावित हुए और जस्ट हम लोग स्पेशली दिल्ली में जो हेल्थ सिस्टम था हमारा वो ऑलमोस्ट एक्सट्रीम पे वर्क कर रहा था. तो जो एक डर है लोगों के बीच में और जो हमारे नेतृत्व में लीडर्स हैं उनके बीच में एक डर सा बना हुआ है, जिसकी वजह से पहले से प्रिपेयर्डनेस रखना इट इज़ एसेंशियल, बट मे नॉट बी रिक्वायर्ड जो है इन फ्यूचर्स. बट फिर भी हम लोगों को पहले से प्रिपेयर्डनेस रखना इट इज़ एसेंशियल थिंग्स. थैंक यू डॉक्टर श्रवण. तो दर्शकों, ये थे डॉक्टर श्रवण DRDO दिल्ली से, जो कि वाराणसी का जो DRDO हॉस्पिटल है पद्मभूषण पंडित राजेंद्र मिश्रा जी के नाम से, उसके देखभाल के लिए, उसकी सारी चीज़ों को चेक करने के लिए आए हुए. इन्होंने हमको बताया कि DRDO किस तरह से इस पैंडेमिक के समय में वर्किंग कर रहा है, किस तरह से कोरोना महामारी में 8 जगहों पर DRDO हॉस्पिटल्स डेवलप किए गए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम कोरोना की इस महामारी से बचा सकें. तीसरी लहर के आने की बात हो रही है. तीसरी लहर के लिए भी सरकार और साइंटिस्ट और डॉक्टर्स तैयारी कर रहे हैं ताकि उस तीसरी लहर का वो असर न हो जो कि दूसरी लहर में देखने को मिला. इन्हीं सारी चीज़ों के साथ DRDO को बहुत शुभकामनाएं देते हुए काशी हलचल की तरफ से आप सभी को नमस्कार.